All right, so the next topic that we have is redox reactions. Now, redox reactions are pretty straightforward. They're one of the easiest reactions, and in fact, they're one of the more important categories of reactions that we have. So, how exactly do redox reactions work? The word itself is based on two words, reduction and oxidation. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को याद करने के लिए हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, ऑयल रिग। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को याद करने के लिए ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन किसका? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, ठीक है, इन दोनों का। सो ऑक्सीडेशन means that you have lost electron or something has gained electron, तो वो reduction होगी, ठीक है? So that's the main idea that we have here. Now what about oxygen? Oxygen के लिए it is the opposite. If something gains oxygen, that is oxidation, and if something loses oxygen, then that is reduction. Now there is a fourth definition जो हमारे syllabus में as such नहीं है, but it is a very important one and I feel that we should be using it. हाँ, you just have to make sure कि आप एग्जाम में वो ना लिखें, ठीक है? तो ये आपने ज़हन में बात रखनी कि ये जो फोर्थ डेफिनेशन है ये मैं आपको वैसे ही सिखा रहा हूँ, but you will not be writing this in the exam. And this is that oxidation is increase in oxidation state and reduction is decrease in oxidation state. Okay, so four main definitions. All right, मैंने आपको एक वर्कशीट भी शेयर किया आपके साथ, you can check that out, and in there this is given. So for example, if you look over here, reduction and oxidation both involve transfer of electron. That is important, that हमेशा किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है, that is redox reaction. अब मुझे एक बात बताएं, what kind of bonding is जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था? Ionic bonding. शाबाश. That shows कि ionic bonding is actually a redox reaction. And another way to look at that is कि जब भी anything loses electron तो वो positive charge आ जाता है उसके ऊपर, which means it's an increase in oxidation state. और जब भी कोई चीज लूज करती है इलेक्ट्रॉन, सो उस पे हमारे पास क्या चार्ज आ जाता है? सॉरी, गेन करती है इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज. सो दैट इज अगेन रिडक्शन. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नाउ these are the four definitions. As I said, this one is not in your syllabus, but it is a very useful one और हमें बहुत दफा इसके इस्तेमाल करने से हमारे आंसर्स आएंगे. सो अभी हम आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे. All right, so let's look at some cases. The first case that I have here is oxidation of element. हमारे पास ये सल्फर है. Sulfur element has gained oxygen to make SO2. Now if you use the definition of oxygen, so sulfur के पास left side पे कोई oxygen नहीं है और right side पे दो oxygen है, so sulfur is oxidized. But in such a situation, it might be a little difficult to figure out कि reduce क्या हुआ है. So उसके लिए what we can do is that we can look at the oxidation states. So किसी भी element का oxidation state होता है 0. So ये चीज ध्यान में रखें, elements की oxidation state होती है 0. अच्छा, हाइड्रोजन की होती है +1. Same for group 1. Similarly, group 2 is +2 and group 3 is +3. Then for non-metals, we don't just assign them. We assign them in an order. And the order is funk. We start in this order. ठीक है, आप इसको fun भी बोल सकते हो, आप इसको funk भी बोल सकते हो. Basically, you will first assign a negative charge if the fluorine is there. अगर फ्लोरीन है उसको नेगेटिव चार्ज दे दें और बात खत्म. बाकियों को हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. अगर फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन है, यू डू -2 फॉर ऑक्सीजन क्योंकि वो ग्रुप 6 में, और फिर बाकियों को आप फिगर आउट कर लें. अगर ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन को -3 दे दें और फिर बाकियों को फिगर आउट कर लें. अगर तीनों नहीं है तो क्लोरीन को -1 दे दें और फिर बाकियों को फिगर आउट कर लें. आई विल शो यू थ्रू एग्जांपल्स की कैसे होता है.
Alright, now सल्फर को अगर हम देखते हैं तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट हैं, दोनों जीरो हैं. बट ओवर हेयर सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को हमने -2 दे दिया. क्यों? वी आर फॉलोइंग द फन रूल. एंड देन ऑक्सीजन 2 हैं, सो 2 टाइम्स -2 -4, और उसको कैंसिल करने के लिए सल्फर को +4 होना पड़ेगा. And now if you compare, sulfur went from 0 to +4, that is a clear indication that sulfur oxidize hoya, its oxygen state has increased. Similarly, oxygen has gone from 0 to -2, that's a clear indication that oxygen is reduced. It has lost its oxygen state, it has decreased the oxygen state. ठीक है, and that is how it went from 0 to -2. Now it does not mean कि इसने electrons लिए होंगे, जरूरी नहीं है, but possible है. In this case obviously possible नहीं है, हमें पता है कि covalent bonding हो रही है, but the oxygen state is still there. Now the redox reaction can also be happening in compounds. So for example, in the second equation that we have here, methane is making carbon dioxide and water by reacting with oxygen. Now there is no indication whether this happened by combustion, क्योंकि combustion में भी यही होता है, या ये वैसे उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि दोनों चीजें हो सकती हैं. If you release methane in air and for example there's a gas leakage or something, so वो carbon dioxide and water में बहुत slowly break down होके आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइज होती है environment में. But अगर हम उसे burn कर दें, so that is how it can quickly make that. Turns out, and this is a little related to environmental chemistry, methane, carbon dioxide and water, these three are major greenhouse gases, but the impact of methane is way more than carbon dioxide and water. So if there is going to be methane released, for example there's a leakage, there is some methane that we need to waste, industry experts always burn it. कभी भी मेथेन को एनवायरनमेंट में जाया नहीं होने देते. मेथेन को हमेशा बर्न करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है. क्यों? क्योंकि मेथेन का जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है ग्रीन हाउस का, वो बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिलेटिवली उससे कम है. Alright, but this is a reaction which compound is oxidized. Now, if you look at the third reaction, so it can be a really difficult situation to figure out कि ये कहाँ से oxidation reduction हो रही है. But this is again an idea that the chlorate ion has provided the oxygen so that carbon can form carbon dioxide. So clearly carbon को oxygen मिली है and carbon is able to oxidize itself, and chlorate ion has reduced and given the oxygen to do that. Okay, any more detail than this? Of course there are a couple of other points in this reaction, but wo hame required nahi at the moment. Similarly, these are some examples of reduction. As you can see, mercury 2 oxide mein mercury is being made and oxygen is also released. अब इसको हम कैसे देख सकते हैं? There are two definitions that apply here. एक ये कि mercury has lost oxygen, so that's an indication that यहाँ पे mercury के साथ oxygen है, यहाँ नहीं है. That means mercury ion has lost oxygen. Now, important point, mercury नहीं है यहाँ पे, यहाँ mercury ion है और यहाँ mercury है. ठीक है? So in the exam questions, जो हम बाद में भी थोड़ी देर बात करेंगे, उनमें वो पूछता है कि what is oxidized, what is reduced. You just make sure that you identify the thing from the left side of the equation. So for example, we will not say that mercury is oxidized or mercury is reduced. We will say mercury ion is reduced and oxide ion is oxidized. Okay. Another way that you can use the same ideas about oxidation state. This is an element, so this is 0. This is an element, so this is 0. And over here, we will first assign the charge or the oxidation state to oxygen. Q, we will use the fun rule. FONCl. So oxygen is there, fluorine is not. So I'll just start with oxygen -2. And based on that, mercury will be +2. So this is a super useful trick whenever you need to assign charges, even for transition metals. And you can clearly see that mercury is making this. But ये तो मैंने आपसे कहा था that you cannot talk about this in the exam. So what will we write in the exam?
We will say that mercury ion gained 2 electrons and oxide ion lost 2 electrons. So we will explain, if the examiner asks us to explain how something is oxidation or reduction, we will talk about the ions that we have and we will talk about electrons that they've gained or lost. और मुझे electrons का कैसे पता चल रहा है? बहुत simple सी बात है. How do you make something go from +2 to 0? By gaining 2 electrons. How do you make something go from -2 to 0? By losing 2 electrons. उससे वो ये change आता है. Similarly, in the last example that we have here of reduction, we can see that copper oxide, if we use the idea of oxygen, then copper has oxygen here, but copper does not have oxygen here. So copper is clearly lost oxygen. So copper is reduced. But there's another way of looking at the same idea. We can see that copper on the left side has, again, oxygen is -2, so copper +2. Carbon is 0, copper is 0 again, and then here oxygen is -2. So दो oxygen है तो -4, and to cancel it out, carbon must be +4. Now obviously यहाँ पे question आता है कि ये तो covalent bond है तो ये +4 कहाँ से आ गया? So remember, ये +4 charge नहीं है. This is not charge. This is oxidation state. Oxidation state का idea ये होता है, अगर ये ionic bonding होती तो फिर क्या charges होते? If we were living in a world where only ionic bond was possible, कोई और bonding नहीं possible, then क्या charges होते? वो oxidation state. It's a mathematical idea. And it helps us figure out what is oxidized and how the electrons are shared or whether they're shared. आप कल को polarity के बारे में पढ़ोगे, आप unequal distribution of electrons के बारे में पढ़ोगे, तो this idea will make a better foundation there. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताने लगा हूँ. How do you know just by looking at something, just by looking at an equation, if it is redox or not? If an equation involves an element, does not matter whether it's on the left side or the right side, does not matter, it's definitely redox. So for example, here you can see carbon है, element है, ये redox reaction है. यहाँ पे oxygen element है, redox है. यहाँ copper element है, redox है. अच्छा, यहाँ पर oxygen element है, redox है. यहाँ oxygen element है, redox है. But this does not mean कि अगर element नहीं है तो redox नहीं हो सकता. As you can see over here, ये तो compound है ना, लेकिन ये भी redox है. अब वो कैसे है, क्या है? Obviously some other definition has to apply. But this still means that अगर आपको कहीं पे element नजर आ गया, then आंखें बंद करके you can say that that's a redox reaction. इस पे MCQs आते हैं कि which of the following is not a redox reaction, ये वो, तो वो आप directly बता सकते हैं. अच्छा, this equation has many important facts hidden in there जो हमें इस्तेमाल करने होंगे बाद में. And we will talk about the application of redox process, कि कहाँ पे redox नजर आता है, कहाँ पे उसका इस्तेमाल है, क्यों हमें चाहिए. So for example, here you can see that copper oxide was there, and suddenly we have pure copper. And pure copper is useful. So we can say that this reaction, this reduction of copper oxide, is used as extraction of metal. So redox reactions are used in extracting metals. Similarly, another important idea that you can see over here is that carbon is very strong, very reactive at gaining oxygen. So we can say that carbon is a strong reducing agent. In fact, there are 3 reducing agents that we should know about. मैं आपको लिखवा देता हूं. So reducing agents, there is carbon monoxide and there's potassium iodide.
Similarly, oxidizing agents, there is one in our syllabus that we should know about, KMnO4. Acha. Potassium iodide goes from colorless to brown. And KMnO4 goes from purple to colorless. Now, other than that, we know that whenever ionic bonding is made, metals lose electrons. So metals are reducing agents and non-metals gain electrons. So non-metals are oxidizing agent. होता क्या है oxidizing agent? जो चीज खुद reduce हो जाए वो oxidizing agent है. और जो चीज खुद oxidize हो जाए वो reducing agent है. अब how do you know if something is oxidizing agent? बहुत simple सी बात है. Take that thing, react it with the opposite. अगर आपने चेक करना है कि ये चीज कोई रैंडम कंपाउंड है, इफ दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करें. अगर रिएक्ट कर गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं किया तो नहीं है. अच्छा, फॉर एग्जांपल alcohol, many people consume it, and drunk driving is it's a very dangerous thing. So in countries where these activities are normal, तो वहां पर traffic police या police, they have a simple machine called breathalyzers. Basically it analyzes breath और वो देखता है कि breath में alcohol की quantity कितनी है. अब वो कैसे चेक करता है? Alcohol is a reducing agent. We know that ethanol is a reducing agent. अब वो क्या करते हैं कि वो ब्रेथ एनालाइजर के अंदर, जिसको हम ब्रेथलाइजर बोलते हैं, उसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्होंने डाला होता है और उसकी खास अमाउंट होती है कि इतनी परसेंट से ज्यादा अगर अल्कोहल आएगा तो वो रिएक्शन कर जाएगा. सो अब क्या होता है? दे गिव इट टू अ ड्राइवर हु दे सस्पेक्ट, एंड इफ द ड्राइवर ब्रीथ्स इनटू इट, तो उसके ब्रेथ में अगर अल्कोहल होगा, दैट अल्कोहल विल रिएक्ट विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब अल्कोहल इज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट थिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो रिएक्शन हो जाएगा. एंड व्हेन द रिएक्शन हैपेंस, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल चेंज कलर. तो अगर KMnO4 होगा तो it will go from purple to colorless. Usually they use another oxidizing agent which used to be in our syllabus, it's not anymore. उसका कलर चेंज होता था ऑरेंज टू ग्रीन, तो वो बड़ा डिस्टिंक्ट कलर चेंज है, वो नजर आता है, एंड दे नो कि दिस पर्सन इज डूइंग ड्रंक ड्राइविंग. सो हमें पता चल गया. सिमिलरली इफ यू वांट टू कंफर्म इफ समथिंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से उसका रिएक्शन करा दें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम में वो कहता है कि ये एक चीज है, बताएं ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, तो ऑल यू हैव टू डू इज रिएक्ट इट विद potassium iodide, and we say the test would be pass through potassium iodide aqueous, and of course if the color changes from colorless to brown, हमें नजर आ रहा है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. जी, कोई सवाल? Alright, let's look at this question. In each of the following state which reactant has been reduced? बहुत आसान है. I will use multiple methods to explain this. So let's start with the very basic one. We already know the first of all कि इसमें आयोडीन है. इस आयोडीन के होने से हमें कंफर्म हो गया कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है. यहां पे सल्फर है, रिडॉक्स रिएक्शन, यहां हाइड्रोजन है, रिडॉक्स रिएक्शन. अगली बात, we can clearly see that carbon monoxide has one oxygen and now it has two. Carbon monoxide has gotten oxygen, ये oxidize हुआ. So ये reduce हुआ है क्योंकि इसके बाद दो ऑक्सीजन है और यहां पे कोई नहीं है. That is one way of figuring this out. Another way of figuring out कि क्या है, मतलब हमें नजर तो आ गया है that this is the reducing agent and this is the oxidizing agent. Okay, so the reducing agent and that is oxidizing agent. Ryan has asked a very interesting question. Ryan is saying, what if I react potassium iodide with KMnO4? Let's try that out. Potassium iodide, if it reacts, it goes colorless to brown. And KMnO4, if it reacts, then it goes from purple to colorless. अब अगर आप इन दोनों को मिक्स कर देते हो और दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों के कलर्स ऐड हो जाएंगे. So they will go from purple to brown. और हमें वो दोनों कलर्स एक सामने नजर आए. In fact, sometimes when we use
two different things that have their own colors. The colors mix up and they give us a new color जो हमें नजर आता है. In these two cases, obviously, color distinguish करना बड़ा आसान है. By the way, the brown color comes from iodine because इसमें होता है iodide और वो iodine बना देता है. So यहाँ से हमारे सामने नजर आ रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. यहाँ पे इसका -2 है तो इसका +2 होगा. इसका -2 है तो इसका +2 होगा. इसी तरह ये -2 है तो 2 times -2 is -4. उसको कैंसिल करने के लिए कार्बन मस्ट बी +4. And based on this, we can clearly see that carbon is oxidized to +4 and iodine is going from +2 to 0. But again, हमारे syllabus में they just ask us to identify it. अच्छा, ये कुछ basic question है. Let me attempt another one here. Let's say मुझे phosphorus की oxidation state पता करनी है. So how will I do that? I will again use the fun rule. FONCL. That's the order in which we'll work with. So मेरे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को -2 सबसे पहले असाइन कर देते हैं. That gives me a total -10. तो -10 है और 2 फॉस्फोरस पे उसको डिवाइड करना है तो हर फॉस्फोरस को टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा +10. -10 को कैंसिल करने के लिए +10. And then because I have 2 phosphorus, each will get +5. So you can clearly see how the charges go. In fact, if you remember how we made formulas, then you already know that the formula shows the charges cross multiplied. Okay, what do we do in this case? Here, let me explain it. We have a -2 charge overall. We don't have like 0 charge overall. We have -2. So for this situation, here's what we'll do. We'll look at the individual charges. So total -2 है ना, individual देखते हैं. This is -2 for oxygen. तो अब जरा सोचो 4 times -2 is -8. -8 में मैं क्या ऐड करूं कि ओवरऑल -2 बन जाए? What do I add to -8 so that it becomes -2? What do you think? 6. +6. Shabash. So that shows that sulfur should be +6. If you're somebody who's not very confident in this, then here's another thing you can do. You can just say sulfur is X. So X plus 4 times -2 is going to be equal to -2 overall. So X minus 8 is -2. Just solve this equation. X equal to 6 aa jayega. And that's how we know. In fact, this is also called sulfur 6 ion. And the oxygen state is written in Romans. Let's try some past paper questions. Past papers में आपको एक क्वेश्चन बार बार नजर आएगा कि वो आपसे पूछेगा कि बताएं जी कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है, कैसे हुई है. एक्सप्लेन का मतलब है कि बताएं कैसे हुई है. अब उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन करनी है. जब भी बात करनी है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन करनी है. यू कैन यूज द ऑक्सीजन स्टेट्स टू अंडरस्टैंड इट, but you will write your answer using the ideas of electrons. Similarly, they ask you to write ionic equation. Ionic equation is also called half equation. So I will not separately teach you ionic equation. हम practice करेंगे questions आपको साथ साथ समझ आ जाएगी. So let's get started. This question explained by referring to the equation. When they say referring to the equation, इसका मतलब है you have to pick things from here. जैसे अगर लिथियम की बात करो तो Li लिखो, जिंक की बात करो या जिंक आयोडाइड की बात करो तो इसको पिक करो. Why this reaction involves both oxidation and reduction? Now, here's what my rough work first. Before I do this, what I'll do is मैं इसको पहले charges assign कर दूंगा. ये 0 है, ये -1 है, ये -1 है, ये 0 है. 0 क्यों है? क्योंकि एलिमेंट है. -1 क्यों है? क्योंकि ग्रुप 7 है. अब जिंक is not a transition metal. Remember, zinc is not a transition metal. So ये +2 होगा. और अगर मुझे नहीं भी याद ना तो -2 होगा because 2 आयोडाइड है. So उनको कैंसिल करने के लिए +2 होना चाहिए. Similarly, this lithium is going to be +1 and now I'm ready. मेरा rough work complete हो गया. मुझे नजर आ रहा है that lithium is going from 0 to +1 कैसे? By losing electron. Zinc is going from +2 to 0 कैसे? By gaining 2 electrons. अब जरा गौर से देखना मैं लिखता कैसे हूं. Lithium atom
loses an electron. I can also say each lithium atom loses an electron. Notice I did not talk about oxidation state. और मैंने आइडेंटिफाई किया है कि वो कौन सा पार्टिकल है. मैं ना भी लिखूं ना तो भी ठीक है. अब जरा अगला देखता हूं. Each zinc ion, and that is worth a mark. Because अगर मैं यहां लिख दूं कि each zinc खाली zinc Zn लिख दूं तो वो गलत हो जाएगा. क्यों भाई? Zn इस पूरी साइड पे है ही नहीं. Zn doesn't exist in the reactant, it's only as a product. So product तो reaction के बाद हुआ ना. It's not doing anything on its own, it's just made as a process. So we have to specify from the reactants. So each zinc ion gains 2 electrons. And there you go. So oxidation, so reduction. Another way to explain this would be कि मैं लिख दूं, पहले मैं definition लिख दूं, that oxidation is loss of electrons, reduction is gain of electrons, and then I specify what has gained and what has lost. But however I write, it is super important that I connect the idea of charges, the idea of electrons to redox. आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के केस में आते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग का वो कहता है कि रेफर करो, रेट ऑफ रिएक्शन के केस में आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रेफर करो, ग्राफ से रेफर करो, यहां पे आते हैं आयनिक बॉन्डिंग के अंदर ये डिस्कशन होती है. इन सब में एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू राइट द डेफिनेशन. वो कभी भी आपको बोलता नहीं है सेपरेटली कि डेफिनेशन लिखो, लेकिन जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि बाय रेफरिंग टू समथिंग, आप समझ जाएंगे आपने डेफिनेशन लिखनी है. जैसे यहां पे मैंने एक्सप्लिसिटली डेफिनेशन नहीं लिखी है, लेकिन लिख दूंगा तो भी ठीक है. मैंने उसे बता दिया लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स ऑक्सीडेशन. मैंने क्लियरली बता दिया कि ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन से क्या ताल्लुक है. Another way I could write the answer would be कि oxidation is loss, reduction is gain of electrons, and then I answer this. But जब भी किसी क्वेश्चन में by referring to की बात आ जाए, आपने डेफिनेशन लिखनी लिखनी. All right, I'm skipping B because we haven't studied it yet. It's ATP. Let's do this one. When aqueous bromine reacts with aqueous zinc iodide, a brown solution is formed. Let's see. Aqueous bromine reacting with aqueous zinc iodide. My reactants are laid out for us. This and this. Let me just write an equation as my rough work. So bromine in the aqueous situation reacts with zinc iodide. Now you guys know periodic table. You have it in the worksheet at the end as well. Can anybody tell me how bromine and iodine compare in terms of reactivity? They're non metals, Bromine right? is more reactive. Very good, Minail. Bromine is more reactive. Does anybody recall why? It is above zinc in the reactivity series. That is just telling me again that bromine is more reactive. The reason should come from the atomic structure. So bromine is a non-metal. It has less shells, which means it can attract electron strongly. Chota atom hai na? Smaller atoms find it easier to attract electrons. Iodine has more shells, it finds it difficult to gain electrons. And that is how bromine is faster, more reactive in terms of gaining electrons. Yes, Ryan, you're right. All right, so let's see. I know that zinc bromide will be made. Why? Because iodine is going to be, iodide is going to be reduced and iodine is going to be made. Now tell me, people, what is the color of bromine solution? Orange or red brown. And what's the color of iodine? It is brown. So clearly हमें नजर आ रहा है. Aqueous iodine है, by the way. All right, so let me write the answer. Name the products. They have asked us to name. We will not write formulas. So zinc, bromide, and iodine.
Explain why aqueous bromine does not react with aqueous zinc chloride. Clearly नजर आ रहा है bromine और chloride का comparison है. We'll say chlorine is more reactive than bromine. All right. We can also say bromine is less reactive than chlorine. A drop of black ink is placed at the bottom of a beaker of water. Ink darkens when used on paper. This is because iron 2 ions are oxidized to iron 3 ions. Oxidation का भी बता दिया उसने, charges भी बता दी. So let me write this out. Iron 2 is making iron 3. Now people pay attention. Ionic equivalent कैसे लिखते हैं? You have to balance the charges on both sides. मेरे पास इस वक्त 2 plus है इस साइड पे और इस साइड पे 3 plus है. How do I make 3 2? अगर सोचो आपके पास एक इक्वेशन होती 2 is equal to 3 plus x, तो x क्या है? It's 1 negative, right? यानी plus electron. And that's how you balance it out. There you go. I can clearly see iron 2 is oxidized to iron 3. Notice I said iron 2. I did not say iron. Because I don't have iron here. Iron होता है Fe. अकेला. Zero charge के साथ. मेरे पास है ही नहीं. Describe a test for oxidizing agent. What should I react it with? एक चीज को मैंने prove करना है कि oxidizing agent है. What should I react it with? I should react it with a reducing agent. The opposite. So my oxidizing agent, एक ही syllabus में हमें याद करना है KMnO4, a reducing agent, Ki. So we'll say pass through potassium iodide aqueous. Yeah, aqueous potassium iodide. An observation, colors, colorless to brown. And there you go, done. Okay, 4A is pretty easy. I'll share the solution with you. Let's see over here. Explain in terms of movement of electrons how zinc bromide is formed from zinc atoms. ठीक है. Zinc bromide बन रहा है. Let's look at the charges first. 0, 0, plus 2, minus 1. So let's talk about it. From the left side, you have to pick the particle, and from the right side, you have to compare it. So we'll say Zn loses 2 electrons. Yeah, each Zn atom loses 2 electrons to make zinc ion. ये वाला पोर्शन हम ना भी लिखें तो खैर है. मेन मार्क्स इसके हैं. Each bromine atom, या तो आप ये लिख सकते हो या आप लिख सकते हो that each bromine molecule gains 2 electrons. I would still prefer saying each bromine atom gains 1 electron. And you can add if you want to make Br minus bromide. Okay? Not necessary, but this part is important. Pretty straightforward. Let's try this one. ये तो बहुत ही आसान है. हमें charges सामने नजर आए हमें. ये 0 है, ये भी 0 है. So tell me, what is oxidized? यहाँ पे oxidized कौन हो रहा है? Magnesium. Going from 0 to plus 2. कैसे? Very good, Rahman. कैसे? By losing 2 electrons. So again, we'll say use the equation to explain का मतलब क्या है? बताओ कौन oxidized हुआ, कैसे हुआ? We'll say Mg. Notice I did not write plus 2. I said Mg. जैसे वो यहाँ पे था. Loses 2 electrons, so oxidized. And Zn plus 2. Again यहाँ से pick करना है. इसका नहीं कहना. ये चीज है जो react कर रही है. Gains 2 electrons. So reduced. Very good for us. These questions you can easily do. ये एक question है, E part, which I want to show you. Chromium is extracted by reaction of aluminum with chromium. ठीक है. कैसे होता है? Reaction of aluminum with chromium का मतलब है aluminum को chromium oxide से react करवाया. So aluminum will displace it and Al2O3 will be made.
and chromium will be left out. I'll balance it. बन गया. ठीक है. This shows that aluminum is more reactive than chromium. So we can use redox reactions to extract metals, and at the same time we can use it to check which one is more reactive and which one is less reactive. Because aluminum has displaced chromium, it shows aluminum is more reactive. But then why doesn't aluminum react? It's a fact you must remember. Aluminum has a non-porous. Non-porous means something doesn't pass through it. Layer of oxide which acts as a barrier. Barrier method is very useful when we don't want things to react. Aluminum has it naturally. Aluminum की surface पे aluminum oxide का barrier होता है. And because of that, होता क्या है कि ये aluminum है ना, इसकी surface पे एक barrier बन जाएगा, aluminum oxide का. And now, if any molecule wants to collide with it, oxygen का molecule आता है, वो collide कर नहीं पाएगा oxygen, aluminum तक वो पहुंच नहीं पाएगा. Barrier है ना आगे. Where do we use it? Things that don't naturally have a barrier, हम उनको barrier खुद लगाते हैं. For example, car bodies can easily rust, right? So हम उन पे एक barrier लगा देते हैं paint का. Then there are things जहाँ पे हम paint अगर लगाएंगे तो paint chip away कर जाता है. जैसे car engines के अंदर कोई चीज move कर रही है, so उस पे हम grease कर देते हैं, उसके ऊपर oil लगा देते हैं, lubrication कर देते हैं उसकी. So that way एक तो वो heat इतनी ज़्यादा produce नहीं करता, दूसरा doesn't tear away, third it doesn't rust. Again वो lubricant जो है या जो grease है, it acts as a barrier. So we use barriers all the time to safeguard things against reactions. All right.